there is not a lot of texture in that region, for instance, this sky region, then basically this is the function E of uv has this sort of a response. And when we view it as a surface, it's just a flat surface. Similarly, if we have if we analyze the local region, which is basically this edge, then it is this sort of a surface that we get. When viewed as an image, it is an edge, and when viewed as a surface, this function is basically also depicting sort of an edge, where it does not have a unique minimum, but it has a minimum, or it has a series of minima along, a single direction, basically depicting that this is an edge. But if you have a corner, and by definition, we've defined corners as um, points which are good to track. Okay? This is how we have defined corners. So for this sort of a region, what we have is a unique minimum in its surface. When you view it as an image, you get a very bright point or pixel, or a set of pixels in the middle. And when you view it as a surface, you get a unique local minimum. यहाँ पे थोड़ा सा convention opposite है. This is also what we have discussed previously, and the convention is that um, the basically white is low value and black is large value. तो ये इक्वेशन में सर मैंने पूछना था Mhm. कि सर ये मतलब बेसिकली कोई ऑटोमेटेड प्रोसेस नहीं है, मतलब हम बेसिकली कोई एक पॉइंट कंसिडर करें इमेज के अंदर और उधर हम लोग बेसिकली शिफ्ट दे के चेक करें कि मतलब ये एज है या कॉर्नर है बेसिकली. Mm. Um, of course it is an automated process. मतलब आप एक certain region लेते हैं और उसको shift करते हैं. So yes, it is automated. सर ये जो शिफ्ट्स है ना, तो सर शिफ्ट्स हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब कि हमने कितना को शिफ्ट करना है और किस साइड पे करना है? मतलब अगर सपोज कोई एज है सर, अगर हम एज की डायरेक्शन में सपोज शिफ्ट कर जाते हैं तो हमें तो फिर पता ही नहीं चला कि ये एज हुआ. Mhm. Let me just answer that question. मैं फिर अपने screen में फंसा हूँ because I want to start the recording, and and there are other things. For instance, I cannot write on the screen. So just give me a minute. I'll be with you shortly. इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आउट हो जाती होती है, और मुझे याद नहीं रहती कि क्या कॉन्फ़िगरेशन है. सो प्लीज़ जस्ट गिव मी अ मिनट. अच्छा चलें जी, आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग. ओके. हाँ जी अमार, नाउ प्लीज़ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसको हम ऑटोमेटिकली कैसे डिप्लॉय करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसे ही है? यस सर, यस सर. Okay, so for instance, if you look at this, this this function or equation that we have here, इसको हमने automatically implement करने के लिए all we have to do is to implement this equation iteratively at each and every region. Region से मुराद ये है कि this red region centered at all possible pixels in the image. So ये जो एक red region है, this is of size 11 by 11 pixels, and this has सर been centered at a particular location, for instance this one. और सर इसको हम स्लाइड क्या? सर जी स्लाइड जी, स्लाइड सर स्लाइड शो नहीं हो रही सर. स्लाइड शो नहीं हो रही है. अच्छा जस्ट ठीक है, आई होप स्लाइड्स अब शो हो रही हैं. यस सर. ठीक है. So we have this red region, and this is an 11 by 11 region which is centered at a certain pixel. For instance this one. तो हमने क्या करना है? We have to center such a region at every possible pixel in the image, and for that region basically, which is, so every pixel in the image can give rise to this red region, right? And then we have to analyze that region as to whether it depicts a corner or not.
ठीक है? So for instance, at the moment, the way it is depicted on this slide, we are analyzing this region. In other words, we are trying to ascertain whether this pixel here, the center pixel here, is a corner or not. So if we want to do this for every possible pixel that is present in the image, we have to center this local region at every possible pixel in the image. So for now, we are doing it at this image, at this pixel here. Secondly, in order to then ascertain whether this pixel is a corner or not, we have to shift this local region, that is the red one, upward, leftward, rightward, and downward. And presently we have shifted it upward and rightward, as is depicted by this green region. ये वाला shift है, I of x plus u, y plus v. So uv is a two-dimensional shift which can go from -5 all the way to 5. Yani both of u and v can take on values ranging from -5 to +5. यही possible shifts हो सकते हैं. अदरवाइज अगर फर्दर इस रीजन को शिफ्ट करेंगे तो फिर इस ओरिजिनल रेड रीजन और फिर जो शिफ्टेड वर्जन है उसका यानी ग्रीन रीजन, इनके बीच में कोई ओवरलैप नहीं रहेगा, राइट? सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल शिफ्ट दैट वी कैन हैव. तो ये जब हम शिफ्ट करेंगे तो हम सम ऑफ एब्सोल्यूट एक मिनट सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस बेसिकली ले रहे हैं, जिसके अंदर ये तो हो गया स्क्वायर डिफरेंस एट ईच पॉसिबल लोकेशन एक्स वाई, ठीक है? और फिर हर पॉसिबल लोकेशन एक्स वाई के ऊपर जो जो वैल्यू मिलेगी उसको सम अप कर देंगे. सो दिस इज नथिंग बट अ सम ऑफ स्क्वायर्ड डिफरेंसेस. यू कैन आल्सो डू अ सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंसेस. द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑपरेटर या जो स्क्वायरिंग ऑपरेटर है, दे आर जस्ट देयर सो दैट ये जो वैल्यूज़ हैं ये मतलब जो नेगेटिव वैल्यूज़ फॉर इंस्टेंस हो सकती हैं वो कैंसिल आउट ना करें पॉजिटिव वैल्यूज़ को, क्योंकि हमने सिर्फ एक एब्सोल्यूट डिफरेंस या स्क्वायर डिफरेंस को मेजर करना है. हमने ये नहीं देखना कि ओरिजिनल इमेज में जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, ओरिजिनल रीजन में, सॉरी रेड वाला जो रीजन है उसमें वैल्यू ज़्यादा है या ग्रीन वाले में ज़्यादा है, इसको हमने नहीं देखना. हमने ये देखना है कि डिफरेंस क्या है. ठीक है? सो होपफुली ये चीज़ क्लियर है. यस सर. सर अब काफी क्लियर हो गया क्वेश्चन होपफुली, ठीक है, एड्रेस वन. और इसको ज़ाहिर हमने ऑटोमेटिकली करना है, मतलब यू हैव टू डू दिस फॉर एवरी पॉसिबल रीजन. And in fact, we also discussed the fact that if we do this for every possible region or every possible pixel in the image, तो उसका जो नुकसान है, in other words, a naive implementation would see us performing 5 billion multiplication operations for a simple 480 by 640 image, जो कि मेरे ख्याल है 0.3 megapixel image होती है. Why? Because सबसे पहले basically we are trying to calculate the number of multiplications that we need to do using this weighting function. And in order to do that, we have to perform window width, which is 11. So window width square का मतलब है 11 by 11. So 11 by 11 का एक window है यानी red window. उसको हमने again u और v जो shifts दिए हैं, so each of u v goes from -5 all the way to +5. In other words, 11 possible values हैं u की और 11 possible values हैं v की. So 11 into 11 is the number of shifts that we can have for any given window of a certain width. 11 square by 11 square. उसके बाद we have to perform this operation, this one, at each pixel in the image. And if the image is of size 640 by 480, तो फिर हमारे पास जो नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं, नंबर ऑफ रीजन्स हैं जो उस इमेज से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज 640 by 480. सो दिस इज द नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस दैट वी नीड टू डू. इसके अंदर हमने जो एडिशंस हैं ये वाले, इनको हमने अभी टेक इनटू अकाउंट नहीं किया. सो ऑब्वियसली दिस इज कंप्यूटेशनली वेरी प्रोहिबिटिव, and in order to implement it more efficiently, there is another approach that we are now going to study. साढ़े 12 मेरी क्लास हो रही है, 12:30 बजे आ जाए सर, मेरी क्लास हो रही है. So the method that we have to discuss is basically where we approximate this surface function E of uv using Taylor series approximation, and
try to come up with a more efficient approach to implement it. Okay. The reason is that the ideal surface that we want is something like this, which should have a unique minimum. इस चीज़ को हमने last time भी discuss किया था. हमारे पास 3 types of regions थे या 3 types of points थे. एक corner था, एक edge था और एक uniform region था. तो इन 3 regions के लिए हमें देखना ये है कि कौन सा corner है, and we ascertained that this is a corner. और corner के लिए जो हमारे पास E of uv जो function है, it should look like this. In other words, it should have a unique minimum. So if we want to approximate this, using some function, then one function is a paraboloid, something like this, which has a unique minimum. So if the E of uv surface attains this form, then we can say, okay, there is a unique minimum, and therefore this point is a corner. So this is what we want to do. So in order to do that, we first recall that there is something called a Taylor series approximation, and basically we can approximate any given function via its Taylor series, which is to basically approximate it as an infinite series of its derivatives at a single point A. So for instance, if we are trying to approximate f of x, then which is this blue function over here. So this blue function is f of x. And we want to approximate it using the Taylor series by adding on more and more terms. And these are the terms that we would add. So f of a is the derivative of the function at point A, at any given point A. So for instance, a could be 0. And f of a plus f dash of a. So f of a is the function evaluated at a. F dash of a is the derivative of the function evaluated at point A. Then f double dash is the second derivative of the function evaluated at point A, and so on. So the more terms we keep on adding, so for instance, right here we're adding 2 terms, then 3 terms, then 4 terms, and so on. So the more terms we keep on adding, the better approximation we are able to do. So at this point, what we will do is to approximate the image I of xy, rather a certain local region in the image, using its Taylor series approximation. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं. So for instance, what we can do is to approximate I of xy using its Taylor series approximation. So what we will do is, with reference to the Taylor series approximation, so this says to evaluate a Taylor series approximation of I of xy would be that we evaluate it at a certain point A. Okay, at a certain specific point, we have to evaluate the function. So let's write I of x plus u y plus v. This is the same as saying I of xa ya, where xa and ya are specific points in the local region. X और Y जो था वो local region का center है, UV shifts हैं. So जब एक specific shift हम देंगे तो एक specific point बनेगा XA YA in the local image region. So we are evaluating the function at certain specific points I x plus u y plus v. उसके बाद we have to add the first derivative divided by 1 factorial and then write x minus a. So इसके लिए, because it happens to be a 2-dimensional function, so we will do it for both dimensions. So सबसे पहले partial derivative of I with respect to horizontal direction. So this is the derivative evaluated at x plus u, यानी जो xa था एक point के ऊपर evaluation की थी, and this has to be multiplied with x minus x plus u. ठीक है, उसके बाद so this is exactly this term here, ये वाला जो term है f dash a divided by 1 factorial times x minus a. So this is the first derivative evaluated at x plus u divided by 1 factorial and times x minus a. So a is x plus u. Then we have the partial derivative with respect to the y direction evaluated at y plus v,
y equals y plus v, y minus y plus v. And of course, we have higher order terms. So right now, we are not going to take into consideration the higher order terms because we are obviously it gets complicated, so we want to simplify it and we want to focus on lower order terms. So if we further work this out, हमारे पास आएगा I of x plus u y plus v plus now x minus x plus u is it's just minus u, ठीक है, because x और x cancel हो जाएंगे, so we get minus u. So I should write minus partial I by partial x evaluated at x equals x plus u times u. Similarly, the next term we have is of course minus partial I by partial y with the derivative evaluated at y plus v times v. अब इसके अंदर हम ये करेंगे कि to basically simplify things. By the way, ये हमारे पास because we are not taking into consideration higher order terms, we're just ditching them. So I will place an approximation here. Now this is no longer equal to, this is just an approximation of I of xy because we are not considering higher order terms. So this is I x plus u to further simplify the notation, हमने x equals x plus u, y equals y plus v को ditch किया है. उसकी वजह ये है कि बेसिकली हम एक तो सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं नोटेशन, और दूसरा अगर हमारे पास एक डेरिवेटिव है किसी भी फंक्शन का, फॉर इंस्टेंस ये एक फंक्शन है और हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में हम डेरिवेटिव या चेंज फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है. सो दिस डिफरेंस इज ऑफ कोर्स डेल टी एंड दिस डिफरेंस हियर इज ऑफ कोर्स डेल एल, ठीक है. सो इट डजेंट रियली मैटर, यानी जो डेरिवेटिव की फंक्शन, जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है डी एफ डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल्स लिमिट del t tends to 0 del f del t, ये इसकी definition है. But when we evaluate the derivative, it doesn't really matter if we say that the derivative is evaluated at t1 or we say that the derivative is evaluated at t2, where t2 happens to be t1 plus del t. तो ये यहाँ पे यही चीज़ थी हमारे पास कि x equals x plus u, यानी we are evaluating at point x plus u or we evaluate the derivative at point x. फर्क नहीं है, यानी we evaluate it at t1 or we evaluate it at t2 which is t1 plus del t. दोनों के ऊपर डेरिवेटिव एक ही है बेसिकली अगर देखा जाए तो, ठीक है, बिकॉज दिस डेरिवेटिव इज सॉर्ट ऑफ समथिंग शेयर्ड बाय पॉइंट्स t1 एंड t2. सो हमने वो जो नोटेशन है x equals x plus u उसको हमने डिच करा दिया है, एंड ऑल्सो दिस हेल्प्स अस सिंप्लीफाई द नोटेशंस. सर जी सर आप ग्रुप में लिंक दोबारा भेज देंगे, कुछ बच्चों को मिल नहीं रहा चैट टीम्स की. मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है, आप उसी से मेरे ख्याल एम एस टीम्स को ज्वाइन कर सकते हैं. और दूसरा आई थिंक से बच्चे को हो नहीं रहा सॉरी सर, ग्रुप में मतलब 6-7 लोग कह रहे हैं उनसे हो नहीं रहा वहाँ पर. अच्छा जस्ट गिव मी अ मिनट. इसमें एक ये भी इशू है कि जो आप लोगों को डिग्री 40 के ग्रुप के ऊपर एम एस टीम्स के कोड्स भी भेजे गए होंगे कल या परसों, उनसे भी यू कैन बेसिकली ज्वाइन द एम एस टीम्स.
वेल मैंने मीटिंग का लिंक भी भेज दिया है, सो होपफुली इससे फ़ायदा हो जाएगा। और मैंने जो इस कोर्स की टीम्स का जो कोड है वो भी शेयर कर दिया, टीम्स का कोड, ठीक है। तो होपफुली इन दोनों तरीके में से किसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, so continuing, this is basically our Taylor series approximation for I x y, that is I x plus u y plus v minus partial I by partial x times u minus partial I by partial y times v। इसको जब हम प्लग इन करेंगे इस यहाँ पे I of x y की जगह, ठीक है, जब हम I of x y की जगह इसको प्लग इन करेंगे तो होगा ये कि I of x plus u y plus v, इस I of x plus u y plus v से कैंसिल हो जाएगा बिकॉज यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एंड देन वी विल बी लेफ्ट विद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वी विल बी लेफ्ट विद पार्शियल I by partial x टाइम्स u प्लस पार्शियल I by partial y टाइम्स v, ठीक है। एंड व्हेन वी डू दैट ये चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। I of x y प्लस u times partial I by partial x plus v times partial I by partial y minus I of x y। So I of x y जो है वो एक्चुअली जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है। I of x y की जगह आप रिप्लेस करें या I of x plus u y plus v की जगह ये रिप्लेस कर दें, मैंने मतलब I of x plus u y plus v की जगह आप I of x y प्लस पार्शियल I by partial x टाइम्स u, जब ये दोनों टर्म्स दूसरी तरफ जाएंगे इक्वेशन के, तो बेसिकली इसकी वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। एंड देन व्हेन वी डू दैट दिस इज व्हाट वी गेट, ठीक है, दिस इज व्हाट वी गेट। Now this is the same as u ix plus v iy the whole thing squared because these two will cancel out, these two terms just cancel out, and this can be written as this, ठीक है। So why can it be written like this, इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। So to get from this to this is a bit difficult, but if we just use this part to get to that part, then it would be easier, ठीक है। So in order to do this, what we can do is to have uv ये I x by the way it is the shorthand for partial I by partial x, ये हमने लास्ट स्लाइड में यहाँ पे बता भी दिया है, ठीक है। and I x square is partial I by partial x times partial I by partial x, ठीक है। this is not the second derivative, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, these are products of first derivatives, these are not second derivatives, so this is not the horizontal derivative of the vertical derivative, no no no, this is partial I by partial x times partial I by partial y, यानी दोनों horizontal vertical derivatives का ये product है। Similarly this is the square of the horizontal derivative and this is the square of the vertical derivative, ठीक है। So ix square times ix iy ix iy iy square, so this matrix times uv, ठीक है। बेसिकली मैंने ये जो समेशन है इसको फिलहाल इग्नोर करके फर्स्ट आई वांट टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू दीज थ्री
you can say vectors, उसके so that we can get something like this. ठीक है, तो इसके करने के लिए मतलब अगर आप ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो you will be easily be able to find that it's the same as what is given on the slide. So this is a 1 by 2 vector, and this is a 2 by 1 vector. So now they have consistent dimensions, and we can simply multiply them. And this basically just gives us u square by x square. Okay. So this is what we have, and this is the same as इन दोनों टर्म्स को हम कंबाइन कर देंगे. ठीक है, you get u square by x square plus 2 times uv by x iy plus v square iy square, which is the same as saying u by x plus v iy, the whole thing squared. ठीक है, so uix plus viy, the whole thing squared, which is the same as this. ठीक है, अच्छा, अब as far as this summation is concerned, ये चीज़ यहीं से आई है और this is basically being carried forward to this point here. यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि these are products of first derivatives, these are not second derivatives. ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ feel free to ask. सर इसके पीछे इंट्यूशन रिपीट कर दें कि ये पूरा प्रोसीजर हम कर क्यों रहे हैं. मैं रिपीट कर देता हूँ, लेकिन आई एम जस्ट कंसर्न कि बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर गए हैं या नहीं कर गए. सर इसमें काइंडली ये भी बता दें कि सर ये कैसे अब कंप्यूटेशनली इनएक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू जो पिछला मतलब. अच्छा, ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह बता देते हैं, बट प्लीज़ गिव मी लाइक 2 or 3 minutes. आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग, और हम ये करेंगे कि एक नई मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं जो कि स्केड्यूल्ड होगी, क्योंकि मुझे कंसर्न है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं इस मीटिंग को. ठीक है, सो प्लीज़ जस्ट गिव मी लाइक 2 or 3 minutes, और यहीं पे इंशाल्लाह मैं दोबारा से एक मीटिंग स्केड्यूल करता हूँ और उसको ज्वाइन करेंगे और हम इन दोनों क्वेश्चंस को आंसर करके फिर हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे. ठीक है.